Okay, guys. So welcome back to part two. So I just I just have changed the theme a little bit and try to make it a more romantic right now. So that today I thought to do twin flame energy channeling also for you guys. So let's see if it happens or not. But I have do jotted down the energy readings. And before going live, I had done a tarot card also for the collective. Earlier, I never did a tarot card reading for the collective twin flames, but these days, because I'm so much into what you call this, business, and it's really terribly hectic. यार मन तो करता है कभी ऐसे आप लोगों के साथ भी बैठ के बात करूं कि यार कोई एज अ दोस्त ही मेरे से बात करो कि कैसा चल रहा है, क्या हालचाल पूछ लो सर, थोड़ा सा मैं भी एक फ्री होके बात कर पाऊँ. खैर, पर इतना टेंशन है आप सोचो लाइफ में, ठीक है. बट खैर जो भी है, तो बिफोर स्टार्टिंग विद द एनर्जी चैनलिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन किस बात का निशा? आपको तो हर चीज़ में आप कॉन्ग्रेचुलेशन देते रहते हो. कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर व्हाट? हाय मोहित्रा, कॉन्ग्रेचुलेशन किस बात का? बिजी रहना. अच्छा, बिजी रहने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन आप देते हो? ओके, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग. उस बात के लिए आप कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हो 5 इमोजी के साथ. सो आई एम रियली थैंकफुल निशा, एंड आई नो यू हैव बीन अ वेरी लॉयल मेंबर ऑफ द फैमिली सिंस लॉन्ग. ठीक है, तो आई एम ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग एंड एट दिस एज व्हेन my friends are settled down in their life, in sort of settled down in the sense family है उनका, ठीक है ना, बच्चे हैं, they know for whom they are earning in their life, ठीक है, किसके लिए कमा रहे हैं, they know they have their something in terms of, because we are human beings, right? Social need is something that human requires to live a life, but I have been doing all this hard work and trying to build a business, but I don't have anyone in my life कि यार मैं आगे जाके इसके लिए मेरे को ये करना है, right? You guys might say that parents के लिए, my parents are very much independent, ठीक है ना, they don't need me at all, and dad has his own earning and mom also has a very good saving, so they technically don't नीड मी. और वैसे भी मैं घर से इतना ज़्यादा बाहर रहा हूँ, 20-21 साल बाहर रहा हूँ, तो वैसे भी एक वो कनेक्ट वैसे भी छूट गया है कि नहीं होना ही चाहिए बोल के टाइप. ओल्ड एज की वजह से थोड़ा सा हो सकता है, बट क्या जो भी हो, आई डोंट सी माई सेल्फ कि मुझे किसके लिए अर्न करना चाहिए. फॉर whom डोंकी शिट आई एम डूइंग सो मेनी हार्ड वर्क, आई डोंट नो. आई डोंट हैव अ किड इन माई लाइफ, आई डोंट हैव फैमिली, आई डोंट हैव अ वाइफ इन माई लाइफ कि मैं किसके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ. पर जो मेहनत करता हूँ तो पागलों जैसा मेहनत करता हूँ काम को लेके. और इसको लेके मैं यूट्यूब नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग सोचो कि सर यूट्यूब में इतना मेहनत करते हैं, लाइव आते हैं, ये नहीं. तो इससे मैं कौन सा आपको जो है ना मोनेटाइज किया है कि वीडियो अपलोड किया है तो उसमें ऐड रन होगा और मेरे अकाउंट में डॉलर जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है. फ्री में करता हूँ, ठीक है ना. अगेन एंड अगेन आई हैव टू टेल यू गाइज, बिकॉज समवेयर आई फील दैट आप लोग उसी तराजू में रखते हो जिस तराजू में आप दुनिया के सारे इन्फ्लुएंसर्स को रखते हो, ठीक है ना. वी आर नॉट लाइक दैट, तो बोलना पड़ता है बार बार, राइट. तो उसके बाद भी मैं करता हूँ क्योंकि करना है बस, ठीक है ना. एज अ पार्ट ऑफ लाइट वर्क, एज अ पार्ट ऑफ सोल पर्पस करना है तो मैं करता हूँ, ठीक है ना. सर, ट्विन फ्लेम अवेकनिंग की कोई पर्टिकुलर एज होता है क्या? सी मोइत्रा, वेरी नाइस क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड मी. मोइत्रा, ऐसा है, ट्विन फ्लेम अवेकनिंग का कोई एज नहीं होता है, ठीक है ना. पर यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉडकास्ट सेशंस हैव बीन इन हिंदी recorded, okay, and because of that any one of the persons staying in Europe or in Africa or in US, Australia, they will not be able to understand. Okay, so why to restrict any person from this twin flame community who wants to gain few knowledge? So Moitra has asked a very good question. Sir, twin flame awakening does happen at
any particular age? Is there an age definition for a twin flame awakening? So the plain answer would be no. Primary answer would be no to this question. There is no age limit for a twin flame awakening. It can happen at 1 year of age, 6 महीने का बच्चे का भी हो सकता है, or it can happen at the age of 90, 85 when you are already broken down, old age, 80 years, 90 years का, ठीक है ना. But problem with both this extreme age bracket is that you got to understand from here, okay, technical, please understand and participate. Problem is that when you are at a very young age, okay, when you are at the age of like 4, 5, or you are going to your school, then the pressure that this journey brings onto your shoulders is so much that a teenage person will not be able to handle that much pressure, okay. A normal heartbreak from a normal person is also so much that you get devastated and you get shattered, you are not able to handle the pain. Then imagine the kind of pressure this journey will put onto. So if the universe puts the awakening pressure to a 5-year-old person or a 6-year-old, 10-year-old person, will that person be able to, handle the pressure? It doesn't mean that soul has to go through dark night of the soul. Even without going through the dark night of the soul also, if it's a normal thing, having a deep, strong connection with someone, not being able to live without that someone, or having back-to-back lessons on, spiritualism or those sort of things, or, showing the true face of karmics that ये देखो, तुम्हारे माँ बाप अगर कार्मिक है तो ये देखो कितने घटिया माँ बाप है तुम्हारे, ठीक है ना, ये तुम्हारे दोस्त देखो कितने घटिया हैं, ऐसा कुछ बैक स्टैप करके चले गए. एट दैट एज यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल द प्रेशर, ओके. वो जर्नी शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा. सिमिलरली इफ यू आर एट द एज ऑफ 80, 90 ब्रैकेट और 70, दैट एज ब्रैकेट, अवेकनिंग कैन हैपन, बट फॉर द सेम रीजन. एक बूढ़ा आदमी और एक बच्चा आदमी में कोई अंतर नहीं होता, सिर्फ उसके पास एक्सपीरियंस होता है, पर दोनों का मानसिकता, ओल्ड मैन, अ ग्रोन अप मैन, वेरी एक्सट्रीम ओल्ड मैन, and a small, baby, both behave in almost the same way. It's just that the matter of age that one looks very much matured and gray-haired, other acts very childish, but both the person will react in the same way consciously, ठीक है ना. जल्दी दिल टूट जाएगा, इमोशनल होते हैं, डिपेंडेंसी इश्यूज होते हैं, ठीक है ना. ओल्ड एज भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, kindergartens भी किसी के ऊपर डिपेंड होता है. So having said and seen all those circumstances, at least a twin flame awakening can only happen like लगा लो एक 10 साल का बच्चा है, but he is independent and जैसे आप देखते हो ना रोड साइड वेंडर्स में कई सारे बच्चे होते हैं जो कि 8 साल का एज होता है पर अपने फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होते हैं, वैसा बच्चा का अवेकनिंग हो सकता है 6 साल का एज में भी, 8 साल का एज में. वाई? बिकॉज दैट पर्सन हैज ग्रोन अबव हिज एज. 8 years का किड है, बट दैट 8 years kid is also, due to responsibility on his shoulders, has grown up to a man of 18 years. ठीक है ना. He's doing business, he's taking care of his siblings, he's taking care of the family and things like that. That person can handle the pressure. But not a normal person जिसका बाप कमाता है तो खाता है, माँ जो है ना कपड़ा पहनती तो पहनता है, ठीक है ना. Everything he is dependent on his family. That person will not be able to witness the pressure. Similarly, at the old age level also, even if you are 80 years but you have the mentality of a youth, ठीक है ना, you are not broken down. Like take for an example Amitabh Bachchan, ठीक है ना, the most earning member of the Bachchan family, ठीक है ना. He is of the age, जिस age में people take retirement and stay back at home, but that old fellow is still doing KBC shows. You might have noticed his shoes. He does not wear hard rock shoes, वो cushion वाला shoes, sport shoes पहन के आते हैं, यानी कि बैक में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए स्पोर्ट शूज पहनता है कि प्रेशर ना पड़े, या नी जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम होगा. स्टिल ही इज रनिंग द शो. सूट के नीचे कौन स्पोर्ट शूज पहनता है, बट दैट पर्सन इज डूइंग. अमिताभ बच्चन इज वेयरिंग शूज, स्पोर्ट शूज, एंड ऊपर में
सूट पहना होता है, ठीक है ना। खैर, तो ऐसा बंदा झेल सकता है, ठीक है ना, जिसमें वो जज्बा है, ही डज नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू एज, दैट पर्सन कैन हैंडल। बट इन नॉर्मल सर्कमस्टेंस इफ यू से लाइक टॉम डिक एंड हैरी जैसे पब्लिक भेड़ का झुंड है, तो आई सपोज अवेकनिंग एटलीस्ट आपका 18 years एंड अबव में ही होगा, एंड बिटवीन 18 to 40-45 years ब्रैकेट आप लगा लो, ठीक है ना, तकरीबन ये बीच एज ब्रैकेट में आपका मोस्ट ऑफ द पीपल का अवेकनिंग होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद ज़्यादातर लोग मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं होते वो इलेक्ट्रिक शॉक को झेलने के लिए। ओके, आई सपोज आई हैव एक्सप्लेन्ड इट बेटर फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव। अरे सब कुछ मिलेगा, मेहनत का फल मिलेगा, भगवान जी सब देख रहे हैं। ये ट्विन फ्लेम्स कम्युनिटी के लिए भी मैंने किया था खैर टैरो कार्ड रीडिंग, तो मैंने फ़ोटो लेके तो रखा है, वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा किसी न किसी वजह से। सर वेर इज अ फिश बेबीज हैव डाइड रूपाली, ठीक है ना, क्योंकि वो टेम्परेचर और ये सब कुछ होता है। और फिश का क्या प्रॉब्लम होता है सबसे ज़्यादा कि आप ज़्यादा खाना अगर उसको हो जाए, ठीक है ना, एक जैसे एक गोली होता है, छोटा सा एक गोली खाता है, उसमें अगर उसने गलती से उसने 2 खा लिया, उसने खुद से खा लिया, ठीक है ना, आप अब उंगली पकड़ के तो नहीं खिला सकते, खुद से भी उसने ज़्यादा खा लिया तो छोटा सा टमी होता है, वो मर जाते हैं, तो एक एक करके सब मर गए। एनीवेज, कर्म करे फल की चिंता ना करे, हाँ जी बिल्कुल, कर्म ही करते रहो, वही कर रहे हैं और क्या है ना। ओके सर, आप किस एज में हुई थी अवेकनिंग? मेरा तो देखो सीमा, आई हैव टोल्ड यू गाइज मेनी टाइम्स दैट माई अवेकनिंग इज नथिंग दैट सॉर्ट ऑफ रिलेटेड टू माई ट्विन फ्लेम जर्नी. My awakening happened, through karmic relationships, through families and friend circles, and friends, family, relatives. And when Guru entered my life, so he was responsible for my awakening. So that's the reason why I am in a position to lead you guys also, and you guys are not even right now in a position to help anyone. आप लोगों को मन में ख्याल बहुत आता है कि मैं किसी का मदद करूं, बट एक्चुअल में आप किसी का कर पा रहे हो क्या? नील बट्टा सन्नाटा, किसी का नहीं, ठीक है, आपको खुद किसी की मदद की ज़रूरत. So because I was not dependent for any of my spiritual feed, like obviously ये डार्क नाइट ऑफ द सोल एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है ना, जब ट्विन फ्लेम आता है देन यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, बिकॉज ऑल द फोकस लाइट, जैसे अभी एक फोकस लाइट यू सी द शावर लाइट इज थ्रोइंग यू नो एट दिस प्लेस, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखेगा, है ना, ये इसका फोकस, और रिलेटिवली बाकी जगह आपको कम दिखेगा, राइट. सो अकॉर्डिंगली इसमें ट्विन फ्लेम जर्नी में वो चीज़ें टॉपिक ज़्यादा पिक्चर क्लियर हुआ, that's for sure, but there was nothing of that sort of twin flame and related, and so my was vague sort of, I cannot put it into any age bracket that इसी में हुआ, but I suppose एक काफ़ी लेंथ स्पैन में universe has been very kind to me in terms of my awakening process, because phase by phase relationships के झटके एंड ऑल दोज थिंग्स है ना, तो धीरे धीरे करके अंडा को फोड़ा गया मेरे को, ठीक है ना, एक ही बार में फोड़ के ऑमलेट नहीं बना दिया, द वे इट हैज़ हैपन टू यू गाइज, दैट गॉड हैज जस्ट टेकन यू एज ए एग एंड उसी समय फोड़ा आपको जो है ना पोच बना के सर्व कर दिया, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ. सो स्लोली स्लोली लिटिल बाय लिटिल आई वॉज बॉइल्ड, लिटिल बाय लिटिल आई वॉज ब्रोकन, एंड it is in a span of like 10-15 years, 10-12 years I can say, थोड़ा करके जो है ना मेरा अवेकनिंग होता रहा, राइट. एंड गुरु दीक्षा पहले मिला, सिद्धियाँ पहले मिली, और ट्विन फ्लेम बाद में मिला, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई इवन विदाउट लुकिंग एट माय ट्विन फ्लेम फेस टू फेस, आउट ऑफ एनर्जी ओनली आई कुड अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सन इज माय ट्विन फ्लेम. Had not been the grace of my holy masters, I would have never understood that the other person is my twin flame without even seeing face to face. Okay, just after a couple of phone calls,
might be that phone calls also, if you sum up in various phone calls, in totality 6 hours I suppose, maximum 5 to 6 hours, 7 hours max, that's it. I just understood, you know, that this is a different bond, and that's how, you know, my twin flame journey, you know, sums up. Anyways, so I'll just, you know, share with you guys few of the, you know, messages that I received. One message I received today was that she is also a follower and a regular audience. She said that you know, you said in your 2023 prediction that there gonna be some volatility in the stock market, and you know, there can be losses to some people from the stock market. So she told me, can you just share me that video? I told her, why are you asking the video right now in September? She said that because even, you know, what you told is coming true in my life, so I want to listen to that again. So we had some chit chats through chattings, and she told me that, you know, I am eagerly waiting for the 2024 prediction also, because 2023 has, you know, so those guys can also, you know, go and listen to that video, or I'll, you know, showcase as a thumbnail again to you guys on the stories. You can check. Okay. So you guys can go and check कि जो बोला था वैसा हुआ या नहीं हुआ. Okay, so that, you know, you can have that resonance also with you. And similarly 2024, if I have that energy and that, you know, in that track, in that wavelength, then definitely I will try to do that what you call channeling of 2024 much before any channel in the world Tom, Dick and Harry does. माने अभी कर दूं, ठीक है, सितंबर में कर दूं या अक्टूबर में कर दूं, बट डेफिनेटली क्या है ना कि दिसंबर तक आते आते, जनवरी तक आते आते तो सबको ही करता है. तो कई लोग को ये भी लग सकता है कि सर नहीं हो सकता किसी का सुन के चिपका दिया हो, हु नोज, ठीक है ना. तो उसके लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि, एंड बिकॉज स्पेशली दिस लेडी हैड रिक्वेस्टेड मी दैट इफ यू कुड, यू नो, पोस्ट दैट 2024 prediction early. So I think I should keep it in my checklist that 2024 prediction needs to be done early than any person in the entire world does it, you know. Everyone will do it in December and January. Nobody will do it in September, October. Even in November also nobody will do it. Okay, so this is the timeline, I suppose, 2024 annual prediction video I'll be putting. And if you see our other predictions on COVID and all things also, you know, you can go and watch it, you know. You'll see that the prediction that we did in 2020, it is resonating till now also, you know. At that point of time, everybody conceived COVID in a different way. And after the vaccination process and all, everybody thought that, okay, this wave is gone. And but that time only we had told many things about it. I don't want to get into nitty-gritty details right now, because at that point of time we have already spoken. And you guys can go and search, I think, you know, in YouTube. For your help, I'll try to show. यहाँ पे अगर दिखता है क्यों होना चाहिए यहाँ पे. Just a second. वो जाके देखो वो कोई रेगुलर वीडियो है ना. इट्स नॉट दैट, यू नो, दोस कंटेंट यू विल गेट इन अदर चैनल्स. ओके, I could share it from the playlist also, but I don't want to find it from the playlist. ये कोई चैनल है टुगेदर डिवाइन, इसमें निधि चौधरी का वीडियो. कौन है ये? अरे निधि चौधरी टुगेदर डिवाइन. अच्छा, ओके ओके, ये इसने अपलोड किया, पोस्ट का नाम है. ओके, तो ये वीडियो आई थिंक डिकोडिंग कोविड एंड वेज टू डील विथ इट 2 years ago शी इट्स पोस्टेड. एंड this video, yeah, this one, ठीक है ना, that is the thumbnail that you can see on your screen. This video if you go and see, ठीक है ना, 40 मिनट का वीडियो है, आप सुनो इसको, ठीक है ना. see तो क्या बोलूँ, you can go and listen. So things that I have spoken
on this video, no? It is on a span of like 5 years, 6 years, 7, 8 years, 10 years around. Okay, you guys can go and listen to this. So we predicted in 2020, no fucking any other channel, okay, had told this in 2020 only, that what shape this COVID virus will take. Okay, I myself used to follow many of the astrologers video and all. So most of the astrologers were saying, अरे कोविड यार ये ठंड की वजह से आता है, सर्दी खांसी जुकाम, ये रशिया से आया है, ये है चाइना से आया है, वहाँ पे ठंडी है ना, एक बार गर्मी आएगा ना, अप्रैल की गर्मी आएगी ना इंडिया में, सब कोविड चला जाएगा. दैट वाज द थिंग दैट दे वर सेइंग. सूर्य इस राशि में प्रवेश करेगा एंड ऑल थिंग्स लाइक दैट, एंड कोविड इज अ रिजल्ट ऑफ the snow cold countries, and in India there will be don't need to worry, COVID is nothing, बाल भी बाका नहीं करेगा, हम लोग सनातन धर्म, हम लोग हिंदू फलाना ढिमकाना. And those astrologers are having like lakhs of followers in their account, lakhs of followers. And our view was completely different. And you see, go and watch this video, 605 व्यूज है बस, ठीक है ना. यहीं पे अगर ट्विन फ्लेम चैनलिंग होता तो ये 1600 व्यू भी होता, ठीक है. बट बिकॉज ये जो है ना, ये है नहीं, ठीक है, ट्विन फ्लेम रिलेटेड वीडियोस, तो इसमें व्यूज भी जो है ना कम है, ठीक है ना. तो क्या कर सकते हैं, ऐसी दुनिया है, ठीक है. तो अब यहाँ अगर पॉपुलर वीडियोस में जाके देखेंगे ना, सब ट्विन फ्लेम रिलेटेड ही होगा. देखो इसमें 7000 व्यूज़, इसमें 6000 व्यूज़, 5000 व्यूज़, 5000 व्यूज़, ठीक है ना. ऑल दिस व्यूज़, एनीथिंग रिलेटेड टू ट्विन फ्लेम, उसमें व्यूज़ आएंगे दबा के, है ना. एजुकेशनल स्टफ, कोविड, नोबडी वांट्स टू लिसन, and someone in your family will be dying because of that COVID and all, and you will have no clue why things are happening. At least see, I always tell again and again, predictions are not meant to stop from things getting to happen. जो भी भविष्यवाणी होता है ना, जो प्रेडिक्शंस होता है, इट इज नॉट मेंट कि वो चीज घटित होने से रुक जाए. इट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव एट ऑल. इट्स जस्ट दैट इवन इफ there is a tragic incident going to happen, you are aware of it. Okay, suppose if you are staying there and someone comes and tries to push you from a hill side, ठीक है ना. आपको खाई में कोई धक्का मारता है, आपको कितना झटका लगेगा, अरे बाप रे, मेरे को खाई से धक्का दे दिया. someone was my friend or relative I considered as a friend, but that person backstabbed me. But if someone has already predicted that be cautious in life, because at this moment, at this point of time in your life, someone might backstab you, a close someone, that sort of narrative, if you have listened, okay, then what will happen, you are already mentally prepared that yes, someone can backstab me. And that when that scene comes in front of you, you are not that much shaken. आपको पता था, पहले से किसी ने बोला है कि ऐसा कुछ होगा, तो वो इवेंट भी आएगा ना, तो आपको लगेगा चलो ठीक है, बोला भी था, हो भी वैसा रहा है. एंड इफ आर नॉट अवेयर, आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेस लगेगा मेंटली एंड दिल पे लगेगा, इमोशनली यू विल बी शैटर्ड. अरे यार, हाउ डिड दिस हैपन, And regarding world and change of Yug era, we have spoken many times, and that for that you will not get in videos. For that you will get in might be some of our podcast sessions. You will have to go and see, where you will get to see those contents where I have spoken about these world scenarios and all. And 2024 to 2030 will be that same time frame when things will start to get really bad and terrible. Okay, so if you are aware of that video, then fine. And you will be mentally, emotionally fit. If you are not aware, might be when you see the scenarios around you, you might just die out of it. Literally, I am using the word die. You might just die out of seeing the scenario around. It will be that much, suffocating, that much painsome. Okay, so hope so such scenario you don't get to see in your lifetime, hopefully, but who knows. So that's thing, because बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 30 से पहले अवेकनिंग नहीं होता है, थैंक्स दैट्स व्हाई. एंड ऐसा कुछ नहीं है मोहित्रा,
30 से पहले भी हो सकता है, बट लॉजिक इज दैट यू नो, इवन इफ यू सी देयर इज अ प्लैनेट सैटर्न यू नो 7.5, तो आप लगा लो, I have been checking horoscopes of many people, birth energy analysis and all I have been doing. Although for birth energy analysis we never ask for a horoscope. हॉरोस्कोप देख के आपके लाइफ के बारे में बताना तो बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है ना. बिना हॉरोस्कोप देख के बताना वो ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है ना. सो वी डोंट आस्क फॉर योर हॉरोस्कोप. बट even from the birth energy analysis clients also, I have seen that there are many people who are born in this energy of 7.5 only, okay. But does that mean that 7.5 का उसका प्रभाव उस बच्चे के ऊपर पड़ जाता है? No. Even that Saturn 7.5 and in a lifetime, you know, 7.5 comes in your life every 25 years. That means if you live 100 years in your lifetime, 4 times 7.5 is bound to come in your life. So if it comes at your age when you are in a zero stage, okay, आप जब zero age bracket में हो तो 7.5 कुछ नहीं करेगा आपका. It will wait until you reach the age of 25. So your first 7.5 will start when you is the reach of 25 till 32, ठीक है ना. 25 to 32, 7.5 साल, 32 and a half तक चलेगा. Again उसके बाद फिर 25 साल बाद आएगा आपको 7.5, okay. So as per your age, the kind of pressure that you can, you know, take on your soldiers, or the kind of lessons that you are ready to, you know, deal off, ठीक है ना, accordingly even that thing is coming. And twin flame journey is nothing more than a 7.5 या 7.5 का भी बाप है twin flame journey जो है ना. रायता, खिचड़ी, अंडा भुर्जी, क्या आप कौन सा खाना खाते हो ना, दही, लस्सी सब बना देता है, पापड़ा, खाकड़ा, ठेपला सब बना देता है इंसान का. सो दैट मच टेरिबल, ठीक है. तो इसमें एक एज का लिहाज तो यूनिवर्स भी करेगा. हाँ, अगर आप इतना मैच्योर्ड इनफ हो 8 साल के एज में ही, 10 साल के एज में ही, ठीक है ना, महाराणा प्रताप जैसा लोहा लेते हो छाती में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना. उसमें आप किसी भी एज ग्रुप में आप कर सकते हो. ओके सर, क्लियर हुआ, थैंक यू. ओके, ग्रेट. Oh, I am so sorry. I don't understand why you are sorry, रूपाली. मेरे अच्छा फिशेस के लिए सॉरी. ओके ओके फाइन, कोई बात नहीं. मेरे भी फिश टैंक से कुछ फिशेस डाई, ये होता है. एंड वेन एवर सम फिश डाई ना, इट्स एक्चुअली गुड थिंग दैट बिकॉज दैट फिश हैज टेकन सम पार्ट ऑफ द वरीज, सम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ वो अपने ऊपर लिया है. सबके लाइफ में कुछ ना कुछ तो आता ही है, ठीक है ना. बिना किसी कारण के अगर फिश डाई होता है तो ये होता है. घर में कुत्ते बिल्ली होता है, इवन द डॉग्स एंड कैट्स टेक द यू नो बैड वाइब्स ऑन टू देम, बट बिकॉज द डॉग्स एंड कैट्स आर फिजिकली मोर स्ट्रांगली बिल्ट that even after taking those bad vibes they will feel you know ill for some time and again recover back, bounce back. But fishes can't do that, you know. So and another reason is fish are very much temperature cautious. थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी हुआ तब भी मर जाएगा, थोड़ा ज़्यादा ठंडी हुआ तब भी मर जाएगा. और ओवर ईटिंग एक समस्या है फिश टैंक में. खाना ज़्यादा खाता है, भुक्कड़ होते हैं लोग, एक दाने की जगह 2 दाना खा लेगा. Anybody wants to keep a fish in their house, I'll suggest you 1 fish, 1 जो दाना आता है ना उनका, only 1 seed, 1 fish in 24 hours. 24 घंटे में एक फिश को एक खाना दो. इवन 2 days में एक बार दोगे तब भी चलेगा. पर क्या ना, इंसान को लगता है नहीं मैं खा रहा हूँ, मेरा पेट फिश है, हाउ कैन आई कीप इट हंग्री. आप प्यार में डालते हो, प्यार मोहब्बत में, वही उसके लिए जहर हो जाता है, मर जाता है. हमारे मम्मी पापा भी जो ट्विन फ्लेम को जन्म देते हैं वो भी मास्टर सोल हो सकते हैं. हाँ, चांसेस है दैट दे आर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ मास्टर सोल. एंड इफ यू सी द हैबिट्स एंड पर्सनैलिटी ऑफ योर पेरेंट्स ऑल्सो, सो दे विल बी सम डिफरेंट, यू नो. इफ यू check in terms of divine feminine families, then they will be a little bit more spiritual, they'll be little more innocent, they'll be little bit more spiritual, they'll be little bit more religious, not spiritual exactly, ठीक है ना, क्योंकि वो भगवा कपड़ा डालने से, माला जोड़ी डालने से कोई स्पिरिचुअल नहीं होता है. रिलीजियस, आई टेल यू, जिस भी धर्म में है ना वो दे विल बी ट्राई टू बी अबाउट मेरे रिलीजियस एंड दे विल बी कोवर्ट नार्सिसिस्ट. ओके, डिवाइन फेमिनिन पेरेंट्स विल बी कोवर्ट नार्सिसिस्ट, मानी दे आर हिडन, देयर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी इज हिडन. दुनिया के लिए वो लोग भगवान है, पर अंदर में आपको पता है दैट दे आर कोवर्ट नार्सिसिस्ट. ओके,
and so they are different people compared to the other. And if you see in terms of divine masculine, then their parent will be very much highly materialistic, highly flamboyant, might be more rich also, or show off, to be a rich sort of a person, show off jada. And their mother or anyone among the father and mother of the divine masculine will be highly narcissistic trait, and your divine masculine will be most likely to be the younger sibling in the family, not the elder one, and the younger and the narcissist child in the family, and having a very strong bond with their mother, and the mother is a super narcissist. Okay, so there's a reason why, divine feminine and divine masculine parents are, if you see your friends' parents also, you'll see, my friends' parents are very different. In same scenario, they react very different. My parents are very different. So in a way, your divine feminine parents will react in a way of carelessness or irresponsible. बच्चा क्या कर रहा पता नहीं, कल सुसाइड करने वाला तब भी पता नहीं. Divine feminine parents. And in terms of divine masculine parents, they are so much overprotective regarding their children that they keep a track of everything, every hour what they are eating, every time where they are going, whom they are meeting, what they are, things like that. So too much of caring makes their bond with their parents very much suffocative. Okay, so that's the paradox of being in a twin flame journey, that both the masculine and the feminine is living the same life altogether. Okay, but on a perspective, if you see, it's quite different. Okay, it's something like I'll just show you with a very simple example. Okay, so suppose I have this coin, okay, in my hand. With the light you might not be able to see exactly which is the head, which is the tail, but you can see this is a 5 rupee coin in my hand. Okay, this one. So both the twin flames, masculine and feminine, are the two sides of the same coin. Okay, both are living the life of this coin only, same coin, not even a different coin. Means the major experiences of both the twin flames is same in their life. Okay, because it's the same coin. It's not two different coin. Okay, it is the same shit coin, same. Okay, it's not two different coin, but made up of the same element, made up of the same energy and everything. Okay, this coin, one will always see this 5 printed on it. It's like the head. Okay, and the same coin, is another one is having this share wala printed on it with the emblem of this India and all. It's the same coin. If I place this coin here, both the head and the tail will be here only. So at the energetic level, if you see, both the twin flames are at the same playground. They are not different. But this side is seeing the light. Okay, this side is seeing the light. And the other side is seeing the dark. क्योंकि इसको मैंने ढक दिया ना, इसको upside down कर दिया. So one side is seeing the light. Is the same coin, not two different coins, but one is facing the light. Another is facing the dark. Another is facing towards the dark side. Now you say that, my twin flame is not spiritual, my twin flame doesn't understand. How will he understand this thing, na Baba? Because he's not even facing the light. He's not even looking towards the light. His head is down towards unto something, into darkness. Okay. And only when a situation will come, when everything will get balanced and this coin will finally, stand like this. In that way, both the side, the head and the tail, both the side will finally eventually see the light. Okay, both the head and both the tail. And even in that scenario also, still the perspective will be different. It won't be convergent to, exactly this side facing the light will exactly face this side will also face exactly the same light. It's not like that. Still there will be difference, but at least both will come to a point where both are seeing the light. Do you get my point? I think I have explained it very beautifully with this example. Okay, so you guys need to understand that both your twin flame are living the same life but on two different bodies. Okay, so at the energy level both of you guys are same. So why I explained it? Because
both the parents, one are covert narcissist, one is narcissist, okay, and one looks spiritual, other does not look that much spiritual or religious fundamentally, but eventually this twin flame is also, divine feminine is also getting shattered, feels disconnection from the family and feels isolated in the family because nobody understands them or looks to them. And the other twin flame, who is the masculine, or I should say God flame, we have invented this terminology God flame in terms of twin flame. Why is said twin flame? We'll say God flame, okay. So this God flame in the masculine energy, because you guys are all the particles of the God only, or in the process of becoming a God, if you understand it in a energetic level, okay. So you guys are to be understood as God flame, not more than as a twin flame. It's my own I can't even copyright this word here. It is the own work of my own download, where I call that we should call twin flames as God flames and not as twin flame. So God flame, which is in the masculine energy, okay, that DM will live the same life that DEF is living, but with a different flavor, okay. Here also he is having the disconnect with the family and feeling isolated, not because actually he is isolated, because he is having no privacy at all, okay. That twin flame is not having a privacy of lot. Their parents are so much into them, beta kya kha liya ya beti kya kha liya, kya kar rahi hai, every time and then, every दिन में 10 बार phone करके पता. अगर आप DF energy में हो, your parents will not even call to you for 2 days, 3 days. जिंदा है या मरा है पता नहीं, ठीक है ना. But for a divine masculine, it happens exactly the opposite. Every time their phone is ringing, message coming, or WhatsApp, anything that their parents always wanted to know what is happening with my child. And that over bossiness, over caring, it feels to them as a cage. एक cage में मेरे को रख दिया है. हर बार monitoring मेरे ऊपर. ऐसे आपका मान लो, if I put a CCTV camera on top of you, okay, 24/7, how will you feel? Won't you feel suffocated? There is no privacy in my life here. Every time anybody is watching towards me. So it's the same thing, being disconnected with the family, both the feminine and the masculine God flames, okay. But the point is that feminine taste of being disconnected with the family is completely different, and the masculine dominant energy way of disconnect with the family is, the reason is different, but the repercussion effect, the end result is what? The same thing. Both are disconnected with the family, right? Do you understand? So it's the same coin, one the head and one the tail. Just remember the example, coin theory of Vijay sir, okay. अभी ये हुआ natural, मैंने कभी सोच के नहीं रखा था. That's the beauty of our podcast, जो कुछ भी होता है, it's naturally downloaded and it goes in a flow. I don't keep it written under any bookish knowledge or recorded thing कि ये मैं जो है ना सुना रहा हूँ. It just happened. Coin सामने था, light सामने था, example. और जब उठाया तो मेरे को पता भी नहीं था कि ये example इस तरीके से. But I suppose that's one of the best way to understand the twin flames. Okay. So twin flame paradox. Okay. Sonam Muni 4444. ट्विन फ्लेम की शादी मुझसे मिलने के बाद कैसे हुआ? आई डोंट गेट दिस पॉइंट. ऐसा हो सकता है क्या? और उसकी वाइफ के नाम भी मेरी ही नाम का हुआ. मेरा ट्विन कैसे ऐसे रह रहा, मैं तो अभी भी उसी से प्यार करती हूँ सर. I don't get your comments, but similar incident happened with me also recently when I was looking for some marriage prospect. And you guys know, Vijay sir इतना ज़्यादा सेलेक्टिव है ना कि मैं ज़िंदगी भर अकेला रह लूँगा, पर गलत लड़की से तो शादी नहीं करेगा भाई, ठीक है ना, सीधी सी बात. I'll not get a rotten egg in my life just because I want to, get married. Rather, I'll stay single and die single. That's much better option rather than getting a devastated woman in life or a girl in life. Okay. So I am being very selective, and I was not making interest. Out of a sudden, all of a sudden, this there was thing going on with marriage and something or things like that. So I knew somewhere from the energetic level, your twin flame energy is always watching you. Okay, it happens. And what she has written here, something, उसका wife का नाम भी मेरे जैसा नाम हुआ, something like that.
you guys will be shocked to hear this. I got a marriage, proposal for of a girl who had the exact fucking date of birth of my twin flame. Exact. Okay. And the facial structure is also almost similar. Okay. My twin flame is a very white pigmentation, white fair, what you call it in ladies, I don't, गोरी है बड़ी, ठीक है ना, दूध जैसे गोरी है. And this girl was little bit dark pigmentation, ठीक है ना, whitish brown sort of. बस उतना ही अंतर था, नहीं तो हाइट वाइज, फेस वाइज एंड डेट ऑफ बर्थ इट वाज द सेम. आई सेड भाई माफ कर मेरे को. ठीक है ना. It's really a shitty experience, that. But yes, and I was about to say this in some energy channeling video also, that similar kind of incidents, might be coming across your way also, because it's a ripple, it's a ripple. We all are connected. So any such sort of a big thing happening in one of the twin flames' life will definitely repeat in the other twin flames' life as well. Right? So ओके. आप 11 नवंबर मस्त रहेगा. 11 नवंबर व्हाट इज इट निशा, आई डोंट नो. सर आप आजकल चैनलिंग क्यों नहीं करते हो सेपरेट ट्विंस के लिए? नो, आई विल डू इट चैनलिंग, एंड आई डोंट नो आज ही कर दूं या क्या, बट अभी ये जब तक ये फ्लो खत्म नहीं होगा ना तब तक तो मैं चैनलिंग स्टार्ट नहीं करूँगा. तभी मैंने गुलाब के पत्ते, मोहब्बत के पत्ते, ये सब जो है ना उड़ाना स्टार्ट किया कि थोड़ा ट्विन फ्लेम्स की भी बातें होंगे बोल के. बट क्या है कि वो मैं थोड़ा फ्लो में, जब तक वो मैं ट्रैक में नहीं आता तब तक मैं नहीं करता हूँ. आपकी चैनलिंग बहुत सही होती है. थैंक यू सोनम मुनि, थैंक यू फॉर दैट. एवरीथिंग इज डन बाय होली मास्टर्स एंड डिवाइन ग्रेस. ओके, सो इसमें मेरा कुछ नहीं है. एंड थैंक्स टू ऑल द लिसनर्स. रोजलिन फाइनली शी इज नॉट कमेंटिंग एनीथिंग बट शी इज लाइव लिसनिंग टू अस. डॉक्टर जोबेथ थॉमस, रुचा इज देयर. ओके, एंड गुलाब के पत्ते, एंड या प्रोबेबली बोलेंगे कॉइन थ्योरी, हेड एंड टेल. वाई गॉड फ्लेम सर? आई एक्सप्लेन्ड यू निशा वाई आई एम कॉलिंग इट नॉट एज अ ट्विन फ्लेम बट एज अ गॉड फ्लेम, राइट? एंड Nisha is saying my parents are very kind and compassionate. See, there is a stigma that you cannot see the narcissist side of your parents, okay? But every time I say, this theory cannot be generalized, and there is always an exception. But in majority of the case, you have to have that balls also. You guys are female, so I can't say even balls, okay? So you guys need to have that, strength within you to accept if among your family if someone is a covert narcissist. okay, आप देखो होंगे वो, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ये होता है. डिवाइन फ्लेम, डीएफ गॉड फ्लेम के पेरेंट्स कोवर्ट नार्सिसिस्ट होते हैं, यानी कि दे आर इन अ कोवर्ट, इन अ हिडन शेल. इन आउटर वर्ल्ड दे डोंट डेमिनर द projection of a true narcissist, but covertly they do the same thing, that the DM parents are doing. Only the execution is different. Like the coin theory I explained, it's the same experience they are giving to their children, but the way is different. Basically, if you see, both their parents are irresponsible. If I sum it up in easy words, both the DF parents and the DM parents are irresponsible. Why? Because the DF parents are वैसे भी irresponsible है, उसमें तो कोई logic नहीं लगेगा, rocket science. Why I am telling DF parents are irresponsible? Because they are irresponsible fellows. And DM parents are irresponsible because they are too much responsible. Okay, so you don't give that space to them. If you are too much hammering onto something, that you have to study, you have to work hard, you have to earn, you have to do this thing, what you are eating, where you are going, whom you are meeting, whom you should marry, whom you should not marry, and this, that, fucking that and all, okay. That person will not have any sense of creativity or anything left in their mind to, try out anything new also in their life, okay.
And that is really a suffocating experience, like having a CCTV camera put onto you, like you are a sort of a criminal or something that sort. हमेशा 24 घंटा आपके माथे के ऊपर एक लटका दिया जाए, कैसा लगेगा? I have worked in a scenario when one of my friend, and he eventually started becoming a boss, okay, and he was a narcissist fellow. I never paid attention to it. So narcissists have this thing of power supply. They constantly need this admiration, adulteration, whatsoever you call it. They want to be in the center of attraction every time, and to do that, even without knowing all these theories also, if they happen to come across any empath, okay, or a super empath, someone like me, then I am a very natural feed for the narcissist. Okay, they will be naturally drawn, and they will try to always try to keep a track of what I am doing, where I am doing. And so that guy bugger, although I had a cabin, but that guy had placed the camera in such a way so that he could always have a look even what I'm doing inside a cabin in my office, okay. So that was really strange, and even I handled that situation also very well, So yeah, anyways. So Miracle Saggy is saying, hey, okay, hi Saggy. I suppose he has left also. Okay, Bukkad bol rahe batao. Okay, thank you sir, fishes का बताने के लिए. My mother was blaming me, ज़्यादा खाना देती हूँ इसीलिए बहुत बुक्कड़ होते हैं. हाँ, तो ज़्यादा खाना आपको नहीं देना है, ठीक है. Always you need to feed a little by little. ज़्यादा खाना आपको नहीं देना है. And lesser you give, they are like, जैसे अभी आप यहाँ पिक्चर देख रहे हो एक्वेरियम का या समंदर का, on the ocean, they are not habitual of finding food on daily basis. सिर्फ इंसान को एक दिन में 3 बार खाना है, चाय खाना है, पकौड़ा खाना है, नाश्ता खाना है, दूध पीना है, फलाना ढिमकाना, ठीक है ना. बट एनिमल्स डोंट हैव दिस क्रेज, ठीक है ना, कि डेली खाना मिलेगा, चाहे वो समंदर में रहे, चाहे आसमान में उड़े, चाहे धरती में रहे. दैट इज द नेचुरल, अपार्ट फ्रॉम द होम पेट डॉग्स और थिंग्स लाइक दैट. In general, animals know this tendency. Like camels are riding on the desert, they store the water on their humps for many days. Once they drink, उसके बाद पता नहीं 10 दिन बाद पानी पीने को मिलेगा, 7 दिन बाद पानी पीने को मिलेगा. Even they don't know, So they have this. Fishes also, even the smaller fishes have this thing that एक बार खाना खाए ना, 2 days or 3 days gap you can keep, 2 days at least, because they're very small. They won't die. But one day if you feed too much, they'll die out of overeating. Okay, so you'll have to take care while having fish in your home as pets. Okay, that will have to understand. Okay, someone had put this request to live button. I don't know who had put it, but by the time I thought I'll settle down with these things and then get on to you guys, so okay, someone from the London Star Meditation also listening. So this Sunday we'll schedule up London Star Meditation. I suppose things are okay. Last time you guys someone was in the hospital, someone was having ill sickness and things like that. So this Sunday morning we'll schedule this London Star Meditation. So let's catch up in London Star Meditation Sunday morning also. So we are eventually moving towards part 3. Okay, so in part 3 I should definitely do, I think, twin flame channeling, energy channeling, which we have not done since long time. That is also for your own benefit, for your own good. You understand, from that perspective, whatever we teach, whatever we try to bring your attention to is for your own benefit. I'll tell you just recently, this message I received regarding this prediction from this girl. Another one I received today, she had messaged that her brother was in jail and he got bail, and she had taken this session around 1.5 years back, I suppose, or 2 years back, what to do in this scenario and all. And I had suggested her a remedy. I suppose things have worked out and now he is out. He was in jail. That is also good news. One thing happened with this person.
And yeah, I'll tell you all the things I try to educate you. Okay, it's like I always try to educate you regarding the declining consciousness of the woman in collective. But every now and again what happens is that the general people, I suppose those cockroaches I have already removed from the group, so right now you guys can understand the true essence behind why we speak. Because be it a man or a woman, okay, if the woman consciousness has depleted in community as a whole or in totality, तो क्या होगा, उसका असर तो आप में भी आएगा, ठीक है ना. आप लड़की हो या लड़का, उससे क्या फर्क पड़ता है. एक कौम का, एक झुंड का, एक औरत का अगर अभी जैसे आप देखो एक सोच में, मानसिकता में अगर गिरावट आया, कहीं ना कहीं तो वो आपको भी असर करेगा ना, आप भी समाज में ही रहते हो. बट दिस गर्ल लिटरली she was a good friend, in fact, she literally took a fight on me, and regarding that Manipur incident and all, she told that you are always highlighting only male issues and you are not highlighting woman issues. So I said, what is this then? This Manipur issue, isn't it a female issue where woman is being exploited, and we are trying to highlight that this has gone bad? तो वो चुप हो गई, वहां से चली गई. After around a month, her message came, you won and I lost. Okay, so I told her, what is this you won and I lost? Were we playing any video games or any challenge? What was it? I don't understand. She told that, no, you always used to educate us regarding the woman atrocities and how they take benefit of being the gender woman and how things like that, but I will always overlook. So I said, what happened? Some woman backstabbed you. That's why you have come to this realization right now. क्योंकि कुछ तो गड़बड़ था, वो समझ गया था उसके बाद से. So she said that no, any woman did not backstab me, but a girl who was in a relationship with my brother since 5 donkey years, उसने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से she felt that literally women are piece of shit these days. तो है ना, जब हम लोग बताने की कोशिश करें, आप लोग उस चीज को समझते नहीं हो. आप लोग सोचते हो कि क्या मर्द कहला के रखता है, ऑलवेज मैन इश्यूज एंड वुमेन, बिकॉज मेजोरिटी तो अभी मैन ही पीड़ित हो रहे हैं, वुमेन नहीं है. पर जब बात आई तो आपके घर में भी तो कोई ना कोई मर्द होगा ना. आपका बाप होगा, आपका भाई होगा, है ना, आपका बॉयफ्रेंड ही होगा, कोई तो होगा लड़का, आपका बेटा होगा, कोई तो मर्द होगा आपके घर में भी. और जब इस लड़की का अपना भाई के ऊपर वो सीन आ गया तो वो बाल खींचने लग गई बैठ के. हाउ कुड दैट गर्ल, सिंस 5 years दे वर इन रिलेशनशिप, हाउ कुड दैट गर्ल स्टूप टू सच अ लेवल, ठीक है ना, इतना गिर कैसे सकती है वो लड़की, हमने कभी कैसे नहीं देखा. मैंने बोला यही तो हो रहा है, घर घर की कहानी है. हर जगह लड़कियां जो है ना, जो लाज शर्म हया जो कुछ भी होता है, जिसकी वजह से एक लड़की को लड़की हम लोग बोलते हैं, ठीक है, लड़का को लड़का बोलते हैं, वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की वजह से नहीं होती, ठीक है ना. लड़की में अगर शर्म हया शराफत, अगर ये सब चीज मर जाए तो वो लड़की कहाँ रही, फिर तो कुछ और बन चुकी है, ठीक है ना. लड़की में भी कुछ और बन चुकी है. सो वी ऑलवेज ट्राई टू, बट शी सेड दैट द गर्ल दैट क्रिएटेड अ मेस, लिटरली उसके घर में आके, ठीक है ना, उसके फैमिली के बीच में, फिर पुलिस स्टेशन, पुलिस कंप्लेन कर दिया, 50 चीजें. व्हाई? बिकॉज एवरीवन नोज जेंडर बायस तो है ही, लॉ, जेंडर का बेनिफिट तो मिलेगा ही. एक बार औरत अगर पहुंच गई पुलिस के सामने और जाके बोल दिया मेरा रेप हुआ है, ठीक है ना, ये भी नहीं देखा जाता है तो एक्चुअल में रेप हुआ है भी या नहीं. जस्ट कई बार देयर आर थिंग्स दैट recently I have shared this video also, and on this YouTube channel, people have started to make this video. They see fake cases against innocent men exposed, ठीक है ना, misuse of woman empowerment. 6 days ago I had found this video when it was posted in 3 days. सो ये वीडियो में पूरा ये जो है ना लिख दिया है, सी हैज शोन दिस, कितने देर का, 16 मिनट का वीडियो है. ओके, एंड देयर वाज अनदर सिमिलर वीडियो आई फाउंड रिगार्डिंग this thing regarding men. So these guys
because they have good followers base, they might have good supports and system and all. They have shown literally, she is still a woman only. Okay, the anchor is herself a woman, but she has shown all the dark side of how females are using the law and their gender against men. तो ये सब देख के आप लोग सोचोगे कि नहीं सर, सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती, वही घिसी पिटी डायलॉग लेके आओगे। और प्रॉब्लम आपको कब होगा ये सब न्यूज़ से या ये सब इश्यूज से, ये डिप्लीटिंग कॉन्शियसनेस की वजह से, जब आपका भाई पे बात आएगा, जब आपका हस्बैंड पे बात आएगा, जब आपका बेटा के ऊपर बाप आएगा, जब आपके बाप के ऊपर बात आएगा, तब आपकी फटेगी। आपको लगेगा अरे यार सर तो, विजय सर तो हर बार बोलते थे, पर हम लोगों ने ना कभी इस चीज़ पे सोचा, ना कभी तवज्जो दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग तो खुद औरत हैं, तो हम लोग ऐसे कैसे सोच सकते हैं औरत के लिए, तो पाप लगेगा। तो भाई ये जो लड़की है, ठीक है ना, ये जो काम कर रही है, ये क्या किसी एंगल से मर्द लगती है क्या? ये भी तो औरत है। इसके कॉन्शियसनेस में वो चीज़ है दैट बीइंग अ फीमेल ऑल्सो शी इज नॉट शाइंग बिहाइंड ऑफ नॉट टेकिंग सच इश्यूज। शी इज टेकिंग such issues very easily. There is another channel also, Men for India also. See, that is also run by some lady from Guwahati, Assam, some Kashyap, I don't remember her name. Instagram में तो है, I don't know कि YouTube में Men for India, Men of India something, okay, तो ऐसा कुछ है, ठीक है ना। They have this, even they are, yeah, this is the channel, Men for India, this one. Some pre-planned extortion by my wife. These are, these channels are trying to highlight it. They can do those things even after being a woman. She is doing this thing for the men only. This girl could have, just shaken her ass in the Instagram and earned lakhs of followers. अभी वही तो हो रहा है कि कोई भी लड़की को फॉलोअर बढ़ाने के लिए क्या करना है? छोटे कपड़े पहनना है, थोड़ा सा अपना बूटी दिखाना है, थोड़ा बुक्स दिखाना है, आ जाएंगे फॉलोअर्स। लड़के इतने ऐसे होते हैं, बट ये लड़की ऐसा कोई काम नहीं कर रही कि जो है ना जिससे मास फॉलोअर्स आए। मर मर के मेहनत करके इसने हार्डली जो है ना 200, 2000, 3000 सब्सक्राइबर बनाया है, ठीक है ना। और इसी की जगह अगर वो कुछ वल्गर कंटेंट डाल दिया होता ना, तो अभी यहाँ पे दनादन लाखों मिलियन फॉलोअर्स इसके बन गए होते। बट दीज गाइज आर वर्किंग डैम हार्ड फॉर टू अवेकन यू गाइज रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक्स। खैर, तो वो आप लोग जब समझोगे तो समझोगे, जब तक आप लोग नहीं समझोगे तब तक तो खैर कोई कुछ कर भी नहीं सकता ये सब में, ठीक है। तो अब आप लोग तब जागोगे ना जब आपके घर पे कोई आपके फैमिली मेंबर के ऊपर ये बात आ जाए, देन यू विल गेट टू सी नो थिंग्स इज राइट। एंड वॉट एवर टॉपिक्स वी पिक अप, okay, whatever topics we pick is not under my control also, that I'll speak on those topics using those lines or using those examples. It is all the work of divine downloads only. Naturally आता है। आज लाइव आने के 2 मिनट पहले तक, 5 मिनट, 15-20 मिनट पहले तक भी मेरे को बिल्कुल मूड नहीं था। मेरे को बिल्कुल मूड था मैं बैठ के ना मूवी देखूंगा। मैं टनाटन मूवी डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है ना, मैं देखने वाला था, ठीक है। कल मैंने एक मूवी देखा जैकी चैन का, हिडन स्ट्राइक, वेरी गुड मूवी, ठीक है ना। आज भी मैं देखने वाला था टॉप गन मैवरिक, कुछ टॉम क्रूज का देखने वाला था मूवी, ठीक है ना। तो ये छोड़ के अचानक मेरे को लगा नहीं, आज लाइव आ जाना चाहिए, ठीक है। और लाइव में क्या टॉपिक डिस्कस होता है वो मेरे हाथ में नहीं होता।